everyone, welcome back to the YouTube channel. Today we are going to learn how to apply that not only but also in English. So let's start. So उसके लिए हमें चाहिए पड़ेगा subject plus not only plus verb plus but also plus verb. ये फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे. Can you see the screen? I hope you. So it's for example, Sujata not only learns but also dances. मतलब सुजाता सिर्फ पढ़ाई भी नहीं करती, वो डांस भी करती है या वो लर्न भी करती है. सो हम ऐसे लिख सकते हैं. एंड अदर एग्जांपल आप ऐसे लिख सकते हो. मालिया नॉट ओनली plays football but also studies. ओके ये आप लिख सकते हो. मतलब मालिया सिर्फ फुटबॉल नहीं खेलती बट पढ़ाई भी करती उसके साथ. थर्ड एग्जांपल, सीमा नॉट ओनली स्पीक हिंदी बट आल्सो स्पीक इंग्लिश. ओके ऐसे तरह आप फॉर्मूलाज इसमें यूज करोगे. फिर नॉट ओनली द नेक्स्ट एग्जांपल्स, कीर्ति नॉट ओनली स्पीक्स कन्नड़ा बट आल्सो स्पीक्स हिंदी. मतलब वो सिर्फ कन्नड़ा नहीं हिंदी भी स्पीक करती है कीर्ति. ओके these are the examples, not only but also. So next formula आप इसमें इसी तरह यूज कर सकते हो. इसलिए होता तो subject plus verb plus not only plus adverb plus but also plus adverb. Can you see this? For example, Kitty. Kitty क्या है? Subject. Sings verb not only softly but also glamorously. Glamorously और softly ये है adverb. Can you see? Next, Pearly is not only glamorous but also kind. Pearly सिर्फ खूबसूरत नहीं है, kind है. Glamorous means kind. ऐसी तरह आप ग्रामर्स में यूज करोगे. फिर Sujata works not only quickly but also efficiently. This you can use. Okay. This was the all formula में apply. Third formula है subject plus verb plus not only plus adjective plus but also plus adverb. Like Ananya is not only glamorous but also kind. Okay, Ananya. It's an adjective. Okay, sorry. So subject plus verb plus not only plus adjective plus what also plus adjective. मतलब इसमें आपको adjective मतलब विशेषण, इसमें आप इसके बारे में विशेषता बता रहे हो. Like Ananya is not only glamorous but also kind. देखो जो glamorous kind ये क्या है? विशेषण है, विशेषता बता रहा है. Like famous, kind, glamorous. Okay. Divya is not only smart but also kind-hearted. Okay? मतलब वो smart ही नहीं but kind-hearted भी है. इसी तरह आप लिख सकते हो. Third formula और next formulas है subject plus not only plus verb plus but also plus verb. Subject. Subject मतलब जो नाम ये सब होते हैं उसको subject कहते हैं. मतलब संज्ञा कह सकते हैं. बस not only plus verb मतलब जो action हो verb. Like Sujata not only work hard but also work well. Sujata सिर्फ hard work नहीं करती, she also works well. And second example, Sina not only light fast but also learn well. Okay, ऐसी तरह examples है. Okay, so this was the short video. कैसा लगा आपको? बहुत सारे लोगों को इसमें नॉट ओनली बट ऑल्सो करने में प्रॉब्लम होती है. इसमें कैसे अप्लाई करें, सबको एक क्वेश्चन उठता है ना. That's why this was the shortest video for you, shortest helpful video. So thank you friends. So please chat in a chat box. Are you enjoyed this video?
Have you learned something from this? Thank you. So लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए. चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. Have